So I'm very much excited to start with today's lecture. आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग लिंक्डइन पोस्टिंग को एआई के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोगों को लिंक्डइन पोस्ट लिखने में आलस आता है या लेजी, या हम लोगों से लिंक्डइन पोस्ट नहीं लेके जाते हैं मे बी, तो टुडेज लेक्चर विल सॉर्ट ऑल ऑफ द दोज थिंग्स आउट। तो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम लोग सिर्फ एक टॉपिक डाल के खुद के लिए ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी को यूज करके, क्लॉड को यूज करके, या ओवरऑल एआई को यूज करके कैसे हम लोग यहाँ पे लिंक्डइन पोस्ट को क्यूरेट कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू गेट अ लॉट ऑफ हायर इंप्रेशंस, अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट। एंड वो तुम्हारे ही टाइप के टोन में होगा, स्टाइल में होगा, जिस स्टाइल में तुम लिखना चाहते हो उस स्टाइल में वो लिंक्डइन पोस्ट क्यूरेटेड होंगे। एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता है तुम लोगों को किस स्टाइल में लिखना चाहिए जिससे तुम्हें हाई एंगेजमेंट आए, ज्यादा रीच हो, ज्यादा इंप्रेशन आए एंड ऑल दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। आज का लेक्चर सारी चीजों को क्लियर कर देगा। ओके, सो आई एम हैविंग माय लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन राइट ओवर हियर। ठीक है, सो आई विल शो यू कि कैसे मैं अपने लिंक्डइन पोस्ट को लिखता हूँ यूजिंग एआई। ओके, एंड हाउ अ लॉट ऑफ फाउंडर्स, लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट entrepreneurs using AI to write LinkedIn post for them as well. देन आई विल शो यू कि अगर तुम लोगों को लेट सी किसी और की लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी लगती है, या तुम्हें लगता है कि यार आई एम सीइंग दिस टाइप ऑफ लिंक्डइन कंटेंट एंड उसके बेसिस पे मुझे अच्छा लग रहा है कि ठीक है मुझे ये टाइप के पोस्ट, अगर मेरे भी ऐसे पोस्ट साउंड करते या मेरे भी ऐसे टाइप के पोस्ट दिखते और समथिंग लाइक दैट, तो मुझे ज्यादा बेटर लगता है या तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, समथिंग लाइक दैट। सो फॉर दैट I'll tell you कि how to replicate that style of writing as well in your own post. Okay, and LinkedIn अगर किसी को नहीं पता, LinkedIn is a platform जिस पे जाके तुम लोग बेसिकली लाइक यू कैन सर्च फॉर जॉब्स, यू कैन नेटवर्क विद पीपल, सारे फाउंडर्स, सारे कंपनी के फाउंडर्स, सारे एंटरप्रेन्योर्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर तुम लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, गो फॉर लिंक्डइन, तुम लोगों को काफी नई जॉब्स मिल जाएगी। ठीक है, इसमें तुम लोगों के लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है यूजिंग एआई, विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल लेटर ऑन इन अपकमिंग लेक्चर्स। तो तुम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल को यूजिंग एआई अच्छे से क्यूरेट कर सकते हो, अच्छे से सेटअप कर सकते हो, एंड उसके बेसिस पे तुम लोग जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो, सीवीज, रेज्यूमेज, ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कसिंग कैसे एआई के थ्रू बना सकते हैं। Apart from that, if you want to network with people, if you want to reach out to people, या तुम लोग connections build करना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटीज के, या फिर तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव से, एचआर से कनेक्ट होना चाहते हो, लिंक्डइन इज द प्लेटफॉर्म फॉर दैट। अगर तुम लोग प्रोफेशनल सोशल मीडिया की बात करो तो लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जो वहां पे प्लेस होता है। ओके, एंड लिंक्डइन इज बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। सो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने लिंक्डइन को बनाया, दिस प्लेटफॉर्म इज बिल्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ओके, सो दिस इज द एंटायर थिंग, दिस इज एन एंटायर ओवरव्यू ऑफ लिंक्डइन। मेक श्योर तुम लोग जाओ अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ एंड मेक श्योर टू चेक इट आउट ऑन योर ओन एज वेल, क्या इसकी फीचर्स एंड ऑल दैट। मेन जो होता है दैट इज ऑफ कनेक्शंस, दैट यू आर कनेक्टिंग विद पीपल। तुम लोग के जो भी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है, जो भी वर्क तुम लोग यहाँ पे कुछ अपडेट्स प्रोवाइड करना चाहते हो, तुम अपना कंटेंट यहाँ पे बना सकते हो, कंटेंट क्रिएशन के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो, रिलेटेड टू प्रोफेशनल बीइंग्स और रिलेटेड टू अपकमिंग एआई ट्रेंड्स और एनी स्पेसिफिक टेक ट्रेंड, या फिर कॉमर्स, मार्केटिंग, किसी भी बैकग्राउंड से तुम हो, मेक श्योर टू क्रिएट योर अकाउंट ऑन लिंक्डइन बिकॉज इट कुड हेल्प यू योर establish as a brand or as an individual creator as well। तुम लोगों की इंडिविजुअल प्रेजेंस बनाने में भी लिंक्डइन हेल्प करेगा, तुम लोगों को कनेक्शंस बनाने में हेल्प करेगा लिंक्डइन। एंड इफ यू वांट टू रीच आउट टू क्लाइंट्स, अगर तुम लोग अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट्स को रीच आउट करना चाहते हो, अब तुम सोचते हो कि आई वांट टू रीच आउट टू द फाउंडर ऑफ जोमैटो, या फिर मुझे जोमैटो को रीच आउट करना है, उनकी कंपनी में रीच आउट करना है, या मुझे लेट से मे बी एक डिफरेंट कंपनी में, टेक कंपनी में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में कहीं ना कहीं रीच आउट करना है एंड उनके साथ बिजनेस करना, समथिंग लाइक दैट। हाउ विल यू गेट कनेक्शंस ऑफ देम, तुम्हें कनेक्शंस कैसे मिलेंगे? लिंक्डइन इज द प्लेटफॉर्म फॉर दैट। सो दैट इज वाई यू शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन लिंक्डइन। एंड तुम लोग यहाँ पे एक्टिवली अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करते हो, तुम लोग लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन गेट कनेक्टेड विद पीपल, यू कैन बिल्ड कनेक्शंस एंड यू कैन बिल्ड नेटवर्किंग ओवर हियर। एंड अकॉर्डिंगली तुम लोगों को लेट से जॉब में अप्लाई करना है, अगर तुम लोग एचआर से, किसी एक कंपनी के एचआर से पहले से कनेक्टेड हो एंड तुम लोग उसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यू कैन रीच आउट टू दैट एचआर फॉर रेफरेंस एंड तुम उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो कि ओके आई एम अप्लाइंग फॉर सो एंड सो पोजीशन, इट विल बी ग्रेट इफ यू कुड प्रोवाइड मी अ रेफरल। सो लिंक्डइन अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूँ, इट इज मोर ऑफ लाइक एक चलती फिरती तुम लोगों की सीवी या रेज्यूमे बन चुके हैं आज की डेट में। मोर देन रेज्यूमे, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे तुम्हारा ज्यादा फोकस किया जाता है। सो इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, अगर तुम लोग क्लाइंट को भी आज के टाइम पे पिच कर रहे हो, तो दे ऑलवेज चेक आउट योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सो दे गो टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड सी तुम लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तुम लोग क्या काम कर रहे हो, तुम लोगों की पोस्टिंग, दैट मीन्स तुम लोग क्या टाइप का कंटेंट डाल रहे हो, तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस कर चुका है। All of those things should always be mentioned on LinkedIn. I'll be showing you how to optimize your profile using LinkedIn as well. So वो सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। अभी let's focus on how to generate post using AI for your LinkedIn. Okay.
make sure to check out, like LinkedIn on your own. तुम्हें काफी सारी नई चीजें खुद भी पता चलेगी. This was an entire overview of LinkedIn that you're having. Okay, so this is the recent post that I posted some time back, 2 months ago or something like that, on which I got a huge interaction and engagement as well. Okay, so when I visited Microsoft, I posted this. So maybe मेरे केस में मुझे थोड़े से डिटेल्ड पोस्ट डालना अच्छा लगता है. So that is why I'm having over here. That is what I'm having over here, that I like to convey my entire story, how I went and क्या क्या hurdles आए थे and all that. And this is a YCodes platform that we are having. ये हमारी कंपनी का पेज है. That is what we are having over here. Okay, so कंपनी के लिए तुम लोग कैसे यहाँ पे कंटेंट क्यूरेट कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट आई विल बी शोइंग यू ओवर हियर एज वेल. अब लेट्स से तुम्हें डिफरेंट पर्सनालिटीज अच्छे लगते हैं, ठीक है, कुछ पर्सनालिटीज को, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को तुम फॉलो करते हो, या कुछ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज या क्रिएटर्स को तुम फॉलो करते हो, या फाउंडर्स को तुम फॉलो करते हो, समथिंग लाइक दैट. यू कैन ऑलवेज लाइक लर्न फ्रॉम देयर पोस्ट. तुम लोगों को उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग अच्छी लगती है, तुम उनको भी रेप्लिकेट कर सकते हो. मतलब एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बट यू कैन ऐड योर ओन टच टू दैट एज वेल. Because I'm having Nikhil Kamath from Zerodha over here, जिनकी प्रोफाइल मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है. I'm having Bill Gates की प्रोफाइल ओपन over here. So we'll be seeing कि कैसे हम लोग इन कंटेंट को रेप्लिकेट करके अपना टच ऐड करके अपनी स्टाइल ऑफ राइटिंग क्यूरेट कर सकते हैं. एंड इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग आवर ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग, अगर हमें खुद अपनी राइटिंग स्टाइल पता है, तो हम लोग कैसे लिंक्डइन पोस्ट बना सकते हैं. लेट्स गो अहेड विद दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे, सॉर्ट ऑफ एक फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग करनी है. यू कैन यूज चैट जीपीटी, यू कैन यूज क्लॉड. हैंड्स डाउन क्लाउड में काफी बार तुम्हें ज्यादा बेटर रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं, काफी बार तुम्हें चैट जीपीटी में मिल सकते हैं. मेक श्योर जब भी तुम पोस्ट स्टार्टिंग में क्रिएट करना चालू कर रहे हो, सेम प्रॉम्प्ट, एग्जैक्ट सेम थिंग्स वॉट एवर यू आर डूइंग, चैट जीपीटी एंड क्लाउड दोनों पे डाल के देखो. उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स देखो कि तुम्हें किसमें ज्यादा लिंक्डइन का जो भी टाइप ऑफ कंटेंट तुम पोस्ट करना चाहते हो, या जो भी टाइप ऑफ राइटिंग तुम लिखना चाहते हो, जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हो, वो किसमें बेटर मिल रही है, चैट जीपीटी में या क्लाउड में. ऑलवेज ट्राई इट फॉर द फर्स्ट 5 पोस्ट. उसके बाद तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, चैट जीपीटी इज वर्किंग बेटर फॉर मी और क्लाउड इज वर्किंग बेटर फॉर मी. इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस, बट चैट जीपीटी एंड क्लाउड इज ऑलवेज बेटर फॉर कंटेंट राइटिंग, स्पेशली फॉर लिंक्डइन, than Gemini or any other tools in the market. Okay, a lot of content creators, a lot of these influencers or these big personalities, individual personalities, entrepreneurs are using these tools for like writing posts. Even I use ChatGPT and Claude for writing all of my content as well. Okay, so you should always add your own touch. Okay, अब तुम लोग अगर सिर्फ AI से लिखवा के डाल दोगे, so that is also something that could come under AI slop as well. Always add your own touch. अगर तुम लोगों को manually कुछ changes करने हैं, always do that. अगर तुम लोगों को manually कुछ touch-ups add करने हैं, do that as well. And always have your own unique style of writing. Okay, किसी से exactly copy paste नहीं करना है. You can copy 70 to 80% or something like that. Always add at least 20 to 30% of your own content, of your own style of writing, or your own points as well. Okay, so maybe I'm having this post over here. This is sort of in a friendly manner, and I've mentioned all the people I met, all the executives I met at this specific event. So I'll just copy this entire content. Basically, what we are doing is we are providing some examples of the post. Okay, so अभी मैं इस post का example दे रहा हूँ to ChatGPT, and I'll tell ChatGPT कि okay, this is the type of post that I write on LinkedIn, and इसके basis पे I'll always give you a topic, and I'll tell you कि okay, इसके basis पे मुझे content लिख के दे दो, something like that. Now this is something that I'm having as experience. Okay, कि मैं Microsoft का headquarters मैंने visit किया, and उसके basis पे मुझे क्या experience मिला, वो आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. अब लेट से मुझे एआई के ऊपर जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, या फिर जैसे एआई समिट में रिसेंटली, like Whitegoods was featured at Delhi in the International AI Summit as well. So basically, अगर मुझे उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस लिखना है, these type of posts are good for that. अगर मुझे उस टाइप का कुछ कंटेंट लिखना है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट कुछ लिखना है, देन दिस माइट नॉट बी अ गुड एग्जांपल फॉर दैट, क्योंकि इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, उसमें मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा. ओके, सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू चैट जीपीटी एंड आई विल टेल इट यू कैन यूज द डायरेक्ट डिक्टेट मोड एज वेल. Otherwise, you can use the whisper flow as well, which we have been already using. Okay, I'll show you the difference कि इसमें तुम्हारे पैराग्राफ की स्पेसिंग नहीं आएगी, तुम्हारे पॉइंटर्स नहीं आएंगे, काफी सारे वर्ड्स जो होंगे वो जंबल भी हो जाते हैं. So that is a difference that you get by using the default dictate mode of ChatGPT and whisper flow if you are using it. Okay, so I'll just go ahead and I'll tell I want you to basically write a LinkedIn post, very engaging, high impression LinkedIn post for me, which could help me get a lot of impressions. It should be in a friendly manner. It should be the style of writing should be friendly. The style of writing should be engaging, and it should connect with the user. It should not be very professional. It should maintain some sort of professionalism, but not using some technical jargons or something. Wherever it's needed, you can use that, but it should be more on the friendly side as well as on the more on the touching side or connecting side with the end user who is reading it out or the with the viewer.
And I'll be providing you some examples of the posts that I usually write on LinkedIn about my experiences of visiting or attending different events or seminars or meeting with people and all that. So I'm giving you an example. I want you to improvise it further and use the same style of writing, use the same type of writing, but make it a bit of concise in the manner and something like that. Okay, so मैंने एक sort of simple prompt दिया है. Now you can always, like what we'll be doing is अभी हम लोग simply prompt दे रहे हैं. उसके बाद इसके बेसिस पे हम custom GPT भी बना लेंगे. ऑल्सो मेक श्योर जब भी तुम कंटेंट लिखवा रहे हो मैजिक प्रॉम्प्ट तुम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो इसमें द 5 steps दैट वी आर हैविंग रोल एंड ऑल दैट तो व्हाट आई डू इज आई पुट रोल मैनुअली ओवर हियर यू आर अ प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफेशनल बट फ्रेंडली एंड engaging LinkedIn content writer with 10 plus years of experience. You can put 5 plus or 10 plus years of experience. I'm putting 5 plus years of experience who have written content for. Now you can give examples कि निखिल कामत के लिए लिखा है, बिल गेट्स के लिए लिखा है, या फिर एक specific brand के लिए लिखा है or something like that. So who have written content for maybe brands like why codes could be an example. It could be individual personalities. It could be anything. Okay, who have written content for Nikhil Kamath, Bill Gates, and maybe Sundar Pichai or something like that. And you always write content in a very engaging and funny way, or not funny way, engaging and connecting way that touches the emotions of the readers. Something like this. Okay, you can always change it. तुम लोग अपने हिसाब से इसे change कर सकते हो, curate कर सकते हो. This is what you're having. अब तुम ये prompt को भी further divide कर सकते हो in the task that you need to provide to it, in the context that you need to provide to it. The context in this case would be the example that you're providing. So role में मैंने ये डाल दिया. And I'll be putting this entire thing into task right now. The context over here would be the example that I'm giving to it. You can attach a screenshot. तुम लोग एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हो नहीं तो तुम लोग अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो मैंडेटरी नहीं है लिंक्डइन के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करो यू कैन इवन कॉपी पेस्ट द कंटेंट दैट यू आर हैविंग ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स या तुम लोग एक सैंपल आर्टिकल भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो वॉट एवर यू लाइक सो दैट इट कैन अंडरस्टैंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट यू आर हैविंग ओके so I'll just go ahead. I'll turn on the thinking mode so that it can think for a minute before responding. ये थोड़ा सोचे उसके बाद respond करे. Okay. So it will think for a minute. उसके बाद it will ask me, okay, I'll give you a certain topic and everything. Okay. So इसने इसे थोड़ा सा sort of rewrite कर दिया. I'll tell it analyze deeply the style of writing that I want you to write in, the target audience and everything. If there are any certain questions that you would like to ask, go ahead and ask those questions. And I want you to avoid using hyphens or any punctuations or any sort of emojis or something. Make it look like a human written LinkedIn post. And I want you to ask me topics about which you can go ahead and write these LinkedIn posts. And these should be always engaging. It should have a CTA and it should look very like connecting with people. Something like that I am putting over here so that it अब ये मेरे से टॉपिक पूछेगा उसके बेसिस पे आई विल टेल इट कि ठीक है इसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे यू नीड टू राइट सो एंड सो कंटेंट और समथिंग लाइक दैट ओके so before writing constantly first your target audience are you trying to attract founders and startup builders college student so I'll answer it mix of all for the very first question. And because the way we frame your experiences, second, your positioning on LinkedIn, who do you want to become known as? The young builder, the student, the AI and tech enthusiast, the community guy who connects with people, the educator simplifying complex thing, founder and educator. Okay, so something like that. And third, your emotional signature when someone reads your post, what should they feel? Motivated, seen and understood, challenged, inspired to take action, curious about your journey. So motivated, inspired, and curious, something like that. Okay. And fourth, are you writing to grow Y codes, build personal brand? So basically, on the basis of past conversation, it is asking Y codes to grow currently, you are writing it or something like that. So obviously, to grow Y codes, so it will mix my content with Y codes. ये Y codes का touch डाल देगा in all of my content. Maybe I can avoid it as well. So I'll put something like build personal brand and credibility. And that's it, I guess. There are no other things.
So here are some content buckets I constantly write for you in a highly engaging and connecting way. That's it. Let's go ahead. And okay. So I'll give it a topic after this. Let's say I went to the AI summit recently, and it will just help me write content for it, and I can post that content on LinkedIn as well. Okay. Credibility. So we'll focus on decisions, thinking frameworks, building. Answer these clearly. What is one difficult moment? Okay. So now I will, from now on, from now on, I'll give you topics of my experiences. Ask me certain questions related to that, and on the basis of that, you can write content for me, and always give it to me in a code block. Okay, so that we can directly copy paste it. It will analyze, and basically now I can tell कि I recently went to the International AI Summit where we featured Y codes, where Y codes was featured, so we pitched and stuff, and uske basis pe it will write the entire content for me. Okay. So when you said the next experience, I recently went to International AI Summit held at Delhi. Vycoots was featured in that, so we pitched Vycoots to the investors, to the clients, and we got a lot of international clients using that as well. And we got connected with a lot of top brands, and we will be expanding globally. So I want you to understand, research more about the AI Summit and how Vycoots played a role in it, and help me curate entire content about my experience. I connected with a lot of founders, a lot of entrepreneurs, lot of VCs and all that stuff, and give me the entire uh, content to post on LinkedIn. Okay, so on the basis of this, it will give me the entire content. Same thing, you can go ahead and you can try it on Claude as well. I'll make sure I just copy paste it and I'll put it on Claude as well. Now the next thing is कि तुम लोगों को images में भी थोड़ी सी thing that you'll be needing to like make it more interactive would be that तुम लोग images भी generate करवा के put करो. Okay, so this was sort of experience based तुम्हें कुछ चीज लिखनी है, so you can go ahead with this. ठीक है, you can even go for some other celebrity or personality that you like and उनके content को तुम replicate कर सकते हो, something like that. So this is how you can write content using like ChatGPT and Claude. So Claude will also ask you certain questions, and इसने basically इसी को optimize करके दिया है. So that is something that you're having over here. The next thing you can go ahead with this for your brand content. Make sure to try this on your own. That you'll copy paste this content. Okay, do it for bytecodes. Copy paste this content. Copy like 2 to 3 of a post, and उसके basis पे tell that we want to post related to AI summit. And उसके basis पे ये क्या content तुम्हें generate करके देता है. Make sure to send a mail of that to us. Okay, at team@thebytecodes.com. Make sure to send a mail related to that to us, and we'll see कि किसने सबसे ज्यादा अच्छा LinkedIn post लिखा है. If you have someone जिसका बहुत अच्छा LinkedIn post होगा, we'll make sure to post that directly on LinkedIn. Okay, या फिर तुम किसी एक specific किसी और topic के ऊपर लिख सकते हो about your experience or something like that, about a testimonial for Bycodes. And if you are someone जिसका बहुत अच्छा like in the top post आता है, top content में आता है, we'll make sure to post that on a platform, on a LinkedIn profile, and we'll make sure to connect your LinkedIn profile with that as well. We'll make sure to mention you in that. Okay. The next thing is, अगर तुम लोगों की खुद की style of writing नहीं है, तुम लोग figure out कर रहे हो इन चीजों को, so you can go ahead and use some personalities जो भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, and उसके basis पे you can go ahead and you can take out content from them, and उसके basis पे you can put, like make post. So for example, what you can do is, so it will like ask you certain questions, and uski basis पे it will tell you, okay, this is a post that you're having, and you can directly copy paste and post it as well. Okay, so I'll do one thing. I'll take a screenshot of this. I'll put it over here, and I'll take a screenshot from some of the posts of Bill Gates when he's providing some sort of information or something. Okay, so maybe something like this. So I'll tell it to analyze certain posts, analyze analyze the posts that are given to you. Make sure to analyze the style of writing and the content that has been given to you. And want to create informational post on LinkedIn. So I'll just give you the topic. You need to research about that topic and provide me relevant, short, crisp, and engaging content for LinkedIn. And after providing that content, as soon as I approve that, make sure to go ahead and generate an image out of that, which I can post on LinkedIn. It should be a subtle, minimal, and good looking image, which should not look AI generated, and analyze the entire content style of writing. And I'll just give you the topic for writing the informational post. Now you can put rule in this, you can put a lot of more information that you want to on this as well. And it will go ahead and it will analyze all of that and it will give you the content. Okay. So let's say I want to write on International AI Summit held in Delhi
India. Okay, something like that. Okay, so it will go ahead. So for your LinkedIn informational post, start with bold macro statement and all that. So I'll just give it a topic and I'll tell it, write on this and give me in code block. Okay, so you just need to put in the topic. Later on, we'll be also seeing how can we build. You can even build your own custom GPT out of that, and make sure to check out the notes of this. You'll get a lot of custom GPTs that we have built for you and that are publicly built by other industries or individual creators as well. Okay, so if AI is reshaping global power structures and all that with policymakers, technologists, AI is now geopolitical. India brings skilled talent, and this is a pretty good thing that you're having. Now, generate an image for posting this on LinkedIn. To post along with this on LinkedIn, that would be a better prompt. Okay, so you can turn on the image mode, create image, and it will create the entire image. And you can just download this image. You can download this content that it has given to you. That is it. That is how you can go ahead and post this on LinkedIn. And make sure to like add Y codes if you're posting anything about Y codes. Mention Y codes. Mention some specific location. So basically, it will go ahead and it will create this entire image. अब तुम लोगों को इसमें कुछ improvise कराना है तुम लोग वो करा सकते हो. You can put some better screenshot. This is just an overview that I'm telling you. Deep में जाके मैंने तुम लोगों को बताया कि कैसे तुम लोग अपने कंटेंट के बेसिस पे बना सकते हो. यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स पुट किए. यू कैन पुट मोर एग्जांपल्स. जितने ज्यादा एग्जांपल्स तुम दोगे उतना ज्यादा बेटर ये वर्क करेगा. Okay, so it has given you this entire content. अब तुम इसको ऑप्टिमाइज करवा सकते हो कि लेट्स से यू वांट टू टेल इट कि पहले रिसर्च करो उसके बाद बताओ. सो यू कैन टर्न ऑन द like research mode and this deep research mode. उसके बाद it will research first. It will scrap a lot of websites. उसके बाद जाके ये तुम्हें कहीं ना कहीं content देगा. You can even do that, and it is generating an image over here. Meanwhile, I'll show you one thing. I'll go to ChatGPT. I'll go to a lot of GPTs that you're having, explore GPTs, and here you can search for LinkedIn. Okay, so you'll get a lot of LinkedIn writers automatically जो पहले से बने हुए हैं. Okay, you can go ahead. It will take a while to load. Meanwhile, you can see. Okay, so International AI Summit held in Delhi, India, a global stage for the future of AI. So see how like a very good, a very pretty image it has generated, and you can use this. You can post it on LinkedIn directly as well. Okay, so professional LinkedIn post writer, viral LinkedIn post writer. These are the two things. Profile builder. These are the three tools that you should definitely use, not the blue ones. Make sure to check out the notes. You will get a lot more tools over there as well. So you can go ahead and it will tell you कि okay तुम लोगों को ये topic देना है. उसके बाद तुम लोगों को LinkedIn का post लिखवाना है and all that as well. So it can draft post for you as well. Make sure to try out all of these tools. So for example, try draft a LinkedIn post on recent industry trends. If I click on this, it will go ahead, it will automatically analyze, and it will give me the prompt, it will give me the content for that. I can go ahead and post that as well. It could ask you certain questions को तुम आंसर करोगे उसके बेसिस पे ये ज्यादा बेटर आंसर दे सकते हैं. So this is all of these things that you should definitely try. Make sure to try it out. Make sure to feel free to reach out to us for any sort of doubts. And this is the thing that we wanted to cover related to LinkedIn writing. जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम लोगों को और प्रैक्टिकली चीजें नहीं समझ आएगी. तुम लोगों को लेक्चर देख के सारी चीजें करनी समझ आ जाएगी. बट मेक श्योर टू एड योर ओन टच टू इट and go ahead and start posting on LinkedIn. And feel free to reach out to us for any sort of doubts. And make sure to try out Claude for the same thing. In a lot of cases, ChatGPT is something which should perform better as well, but it depends on your case. Here, LinkedIn, like Claude is working better in your case or ChatGPT. And we'll be seeing further how to like use this for Insta caption and how to build custom GPTs out of this for LinkedIn, for our own LinkedIn content and for Instagram as well. So this was it for today's lecture. See you guys in the upcoming lectures.